हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे पावर ग्रिड 2026 की जो रिक्रूटमेंट है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का आज हम यहाँ पे चैप्टर 2 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए ह्यूमन रिसोर्स की पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज दिए हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के लिए जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज का जो कंसेप्ट है टेक्निकल नॉलेज का वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर प्रोविजन। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वॉशिंग फैसिलिटी, सेकंड फर्स्ट एड अप्लायंस, थर्ड फेंसिंग ऑफ मशीनरी एंड फोर्थ कैंटिंग। तो करेक्ट आंसर है थर्ड फेंसिंग ऑफ मशीनरी, बिकॉज फेंसिंग ऑफ मशीनरी इज अ सेफ्टी प्रोविजन नॉट अ वेलफेयर। Next, second, a factory under the Factory Act 1948 is defined when worker are. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 5 with power or 10 without power, second 10 with power or 10 20 without power, then 20 with power, 10 without power and 15 with or without power. तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड 10 with power or 20 without power, because factory means 10 or more worker with power or 20 or more worker without power. Next, third, maximum weekly working hours for an adult worker is. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 48 hours, 44 hours, 40 hours, 50 hours. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट 48 hours, because maximum 48 hours per week. Next, fourth, maximum daily working hours means including rest interval should not exceed. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 8 hours, 9 hours, 10.5 hours and 12 hours. तो करेक्ट आंसर है थर्ड 10.5 hours, because spread over including rest 10.5 hour and can extend to 12 hour with approval. Next, fifth, interval for rest must be given after. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 3 hours, 5 hours, 4 hours, 6 hours. तो करेक्ट आंसर है सेकंड 5 hours. No worker should work more than 5 hours continuously. Next, sixth, overtime wages are payable at. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेम रेट, 1.5 टाइम्स, डबल रेट, ट्रिपल रेट. तो करेक्ट आंसर है थर्ड डबल रेट. ओवरटाइम मीन्स ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस. नेक्स्ट, सेवन, विच प्रोविजन फॉल अंडर हेल्थ. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ्टी ऑफ मशीनरी, होइस्ट एंड लिफ्ट. तो करेक्ट आंसर है सेकंड ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर इज अ हेल्थ प्रोविजन. नेक्स्ट, 8, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो डैश ईयर इज प्रोहिबिटेड. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 12, देन 14, 15, 18. तो करेक्ट आंसर है सेकंड 14, बिकॉज चिल्ड्रन बिलो 14 years कैन नॉट बी एम्प्लॉयड. नेक्स्ट, 9, अ कैंटीन मस्ट बी प्रोवाइडेड व्हेन वर्कर एक्सीड. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 100, 150, 250, 500. तो करेक्ट आंसर है थर्ड 250, because canteen required if 250 or more worker. वैसे देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 25 चैप्टर विद प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, 10, क्रेच फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन वुमन वर्कर एक्सीड. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 20, 30, 40, 50. तो करेक्ट आंसर है सेकंड 30. Crèche required when 30 or more women workers are employed. Next, 11, which of the following is not a safety provision. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फेंसिंग ऑफ मशीनरी, सेकंड वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, देन ड्रिंकिंग वाटर एंड फोर्थ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन. तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर इज अ हेल्थ प्रोविजन. नेक्स्ट, 12, वीकली हॉलीडे मस्ट बी प्रोवाइडेड आफ्टर. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 5 days, 6 days, 7 days, ऑप्शनल. तो करेक्ट आंसर है सेकंड 6 days. वर्कर मस्ट गेट 1 day ऑफ आफ्टर 6 day ऑफ वर्क. नेक्स्ट, 13, मैक्सिमम ओवर टाइम आवर पर क्वार्टर आर जनरली. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 25 hours, 50 hours,
75 hours and 100. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड 50 hours. Limit is typically 50 hours per quarter. State rule may be vary slightly. Next 14. Which of the following is classified under welfare? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वेंटिलेशन, लाइटिंग, रेस्ट रूम, डस्ट कंट्रोल. तो करेक्ट आंसर है थर्ड रेस्ट रूम आर वेलफेयर प्रोविजन. नेक्स्ट 15. अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इज कंपल्सरी व्हेन वर्कर एक्सीड. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 1000, 750, 500, 1500. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट 1000. सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायर्ड इन फैक्ट्री विथ 1000 और मोर वर्कर. नेक्स्ट 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ प्रोविजन. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट क्लीननेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, फर्स्ट एड, वेंटिलेशन. तो करेक्ट आंसर है थर्ड फर्स्ट एड फॉल अंडर वेलफेयर नॉट हेल्थ. नेक्स्ट 17. मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अ वर्कर कैन वर्क इन अ डे इज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 8, 9, 10, 12. तो करेक्ट आंसर है सेकंड 9. डेली वर्किंग लिमिट इक्वल्स टू 9 आवर्स. नेक्स्ट 18. विच ऑथोरिटी एनफोर्स द फैक्ट्री एक्ट. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लेबर कोड, सेकंड फैक्ट्री इंस्पेक्टर, थर्ड एचआर मैनेजर एंड फोर्थ ट्रिब्यूनल. तो करेक्ट आंसर है सेकंड फैक्ट्री इंस्पेक्टर. द एक्ट इज एनफोर्स्ड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज. नेक्स्ट 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हजार्ड्स प्रोसेस. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट नो स्पेशल प्रोविजन, सेकंड ओनली हेल्थ रूल्स अप्लाई, थर्ड स्पेशल सेफ्टी प्रोविजन अप्लाई एंड फोर्थ ओनली वेलफेयर प्रोविजन अप्लाई. तो करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड स्पेशल सेफ्टी प्रोविजन अप्लाई बिकॉज हजार्ड्स प्रोसेस रिक्वायर स्पेशल सेफ्टी मेजर. नेक्स्ट 20. एज पर लेटेस्ट लेबर रिफॉर्म कॉन्टेक्स्ट OHS कोड 2020 द फैक्ट्री एक्ट इज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फुल्ली रिपेल्ड, सेकंड पार्टिशली अप्लीकेबल, थर्ड सबसम इनटू OSH कोड एंड फोर्थ इररिलेवेंट. तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड सबसम इनटू OSH कोड. इट टू बी फुल्ली इंप्लीमेंट एवरीवेयर. ओके, बट फैक्ट्री एक्ट प्रोविजन आर लार्जली कवर्ड अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020. ओके, वैसे देखिए ह्यूमन रिसोर्स, प्रोफेशनल नॉलेज, जीके जीएस, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक. तब तक के लिए धन्यवाद.